Good afternoon, everybody. I welcome all of you to today's virtual class. And as you all know, then today we are going to discuss about our subject is English, and the topic is from our textbook, English textbook, and it is lesson 5, the lost camel. And as we have earlier discussed about the same topic, the lost camel, the SGP1, and I hope you all have understood about the topic. And before proceeding toward today's topic, the next part of this story, the lost camel, and today we will discuss about the SGP second and SGP third. And before proceeding toward today's class, let's recall what we have learned in our previous class. In our previous class, we have learned that two merchants were searching for their camel in a desert, and by searching the same camel in the desert, they came to meet, or they met an old man. And whenever they saw the old man in the desert, they thought that the old man must have seen the camel, and they asked them, the merchants asked the old man about their lost camel. And instead of answering the such questions of the merchants, the old man started asking questions to them. तो यार अर्थ कौन हो गत क्लास में समस्त आलोचना करते जो आम जो पाठ अच्छे द लास्ट कैमेल द हजि जो ओट तो से कौन आलोचना करते जो SGP1 रे ना दी जन व्यवसायी मर्चेंट्स जो से माने कौन है जो गोटे ओट जो हजि जाता से मरुभूमि खोजुले खोजु खोजु से माने गोटे से मरुभूमि गोटे बुढ़ा लोक को देखिले तो जेहेतु से बुढ़ा लोक को देखिले से पचारे जे से ओट विषय जो हजि जाइए तो देखीचु कि तो से समय कौन हो से बुढ़ा लोकटी से व्यवसायी मान प्रश्न उत्तर देवार बदल प्रतिबदल से कौन कर प्रश्न पचारि इज द कैमेल लाइम इज द कैमेल कैरिंग गुड्स तो जहाँ भी तुम पढ़ इन आवर SGP1 व्हाट एवर वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास तो से कौन कर प्रश्न पचारि तो उत्तर देवा प्रतिबदल प्रश्न पचारि देन द मर्चेंट सरप्राइज्ड तो तार प्रश्न मर्चेंट मैंने प्रश्न पचार से उत्तर देवार परिवर्ते कौन कर बदल से प्रश्न पचारि तो आम पढ़ी इन आवर लास्ट क्लास. Then today we will discuss about the SGP second and SGP third, which is the next part of this story. तो जो आज जो आम जो लॉस्ट कैमेल अच्छी से लॉस्ट कैमेल जो गप अच्छी जो पाठ अच्छी आमर that is in your page of English book 85, and I request all of you to open your book page number 85, the lost camel. And today we will discuss about the rest part of this story, which is SGP2 and SGP third. Then आम समय अतिबाहित न करके आज आम जो पाठ अच्छी आम बर्तमान आपको बढ़ा. Okay, thank you. Okay, then as we earlier discussed about the SGP1 of this topic, the lost camel, and today we will discuss about the SGP2 and SGP3, or SGP second and SGP third. And as just earlier we discussed that we have already learned that the two merchants were searching for their lost camel in a desert, and in the way they came to meet an old man, and the merchants asked the old man about their camel. And instead of answering the questions of the merchants, the old man started asking questions to the merchants. तो से कौन है ना तो से मर्चेंट्स मानकर जो प्रश्न उत्तर देवार परिवर्ते से बुढ़ा लोकटी कौन कर से प्रश्न पचार आरंभ कर. तो यहाँ आम आलोचना करते लास्ट क्लास रे. In today's class, let's read out. So, आम आलोचना कर let's discuss that. Did the old man answer the merchant's question? So, व्यवसायी मानकर प्रश्न उत्तर से देले, और he started again to ask them questions. What happened next? कौन हला आम आज आलोचना करिबा. Then again I am requesting all of you, then please open your textbook, and it's page number 85 and 86. SGP2. Here, first of all, I am going to read the text whatever is there in the SGP2. And in SGP2 there is, without answering, the old man said to them, is the camel carrying wheat on one side of its back? The owner said it was. They were sure that the old man had seen the animal. Is not the camel carrying
honey on the other side. The owner caught hold of the old man and asked him angrily, "Have you stolen the goods and killed the animal?" "I have not seen the animal," said the old man calmly. The merchant asked him, "Do you think we are fools to believe your story?" And they dragged him to the court. Next, the judge listened to the merchant's story. Then he turned to the old man and asked him where he had seen the camel. The old man said he had never seen it in his life. "How do you know the camel is lame in one leg?" the judge asked the old man. "I looked at the footprints on the sand," said the old man, "and one of them could hardly be seen." The judge smiled and asked why the old man caught the camel. The old man thought the camel was blind in one eye. The animal had eaten the leaves of bushes on only one side of the road, said the old man. "Why do you think the camel was carrying wheat and honey?" asked the judge. "I saw ants carrying fallen grains of wheat on one side of the road," said the old man. "And there were bees flying around on the other side, I suppose," said the judge. "Yes, Your Honor," said the old man. The judge then turned to the merchants and said, "This man had made use of his eyes to look at all things. You have eyes too. Use them. You will find your animal. Having eyes is not enough. Be intelligent too. And when you find your camel, look after it well. Do not leave it alone. Do not give him heavy loads to carry." Then the judge sent them away. Okay, this is the paragraph that we are going to discuss today. So, outside I पढ़ुची, and whenever I am reading, I request all of you to point out the difficult words that come across this pages or paragraphs. तो मुझे पढ़िया समय रे जदि जहाँ भी डिफिकल्ट वर्ड अच्छी से कठिन शब्द अच्छी ताकू तमे टिके मार्क करने ताकू आमे पर आलोचना करिया ताकू आमे ट्रैक करिबा. ओके, रेडी? ओके. Without answering, the old man said to them, "Is the camel carrying wheat on one side of its back?" The owner said it was. They were sure that the old man had seen the animal. "Is not the camel carrying honey on the other side?" The owner caught hold of the old man and asked him angrily, "Have you stolen the goods and killed the animal?" "I have not seen the animal," said the old man calmly. The merchant asked him, "Do you think we are fools to believe your story?" And they dragged him to the court. The judge listened to the merchant's story. Then he turned to the old man and asked him where he had seen the camel. The old man said he had never seen it in his life. "How do you know the camel is lame in one leg?" Judge asked the old man. "I looked at the footprints on the sand," said the old man, "and one of them could hardly be seen." The judge smiled and asked why the old man thought the camel was blind in one eye. "The animal had eaten the leaves of bushes on only one side of the road," said the old man. "Why do you think the camel was carrying wheat and honey?" asked the judge. "I saw ants carrying fallen grains of wheat on one side of the road,"
said the old man. And there were bees flying around on the other side, I suppose, said the judge. Yes, Your Honor, said the old man. The judge then turned to the merchants and said, this man had made use of his eyes to look at all things. You have eyes too. Use them. You will find your animal. Having eyes is not enough. Be intelligent too. And when you find your camel, look after it well. Do not leave it alone. Do not give him heavy loads to carry. Then the judge sent them away. ଏତିକି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଲେ ତା ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଅଛି ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ଯଦି କିଛି ବାହାର କରୁଛି ଆଉ ଯଦି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଥିବ ଦେନ୍ ତାକୁ ତମେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିନେବ ତାକୁ ଆମେ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଓକେ ଲେଟ୍ସ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ବ୍ରଟ୍ ଆଉଟ୍ ଇଟ୍ ମୁଁ ଯାହା ବାଛିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଅଛି ହ୍ୱିଟ୍ WHEAT 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 अर्थ होचे गहम हम समझ जानिछे हम जो रोटी खाइतो अटारु तो द फास्ट होचे wheat 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 अर्थ होचे गहम back the next one is back BAC के back back माने हमर कोन नॉर्मली हमर back पछो back अर्थ होचे पछो बट एथिर हमर बैक हबो से ओटर द बैक ऑफ इट द कैमल बैक माने एथि हबो हमर पिठी हमर जे पिठी अछि ए जे पिठी एको हम बैक कहि थाउ देन honey 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 you all must have know that what is honey 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 कोन खायो को बहुत मीठा लागि था कोन honey अर्थ होछि महू honey अर्थ होछि महू The next one is caught. CAUGHT caught. Caught आमर होछि CATCH catch. Catch रो past होछि caught. Catch माने धरिबा. Catch माने धरिबा. तो एथि caught अर्थ होछि धरिला. Then BELIEVE believe. BELIEVE believe. Believe अर्थ होछि विश्वास करिबा. Do you believe my words? मैं मु कथा विश्वास करो? Yes, I believe. हाँ मैं विश्वास करे. believe अर्थ होछि विश्वास करिबा. Then DRAGGED dragged. DRAGGED dragged. Dragged होछि DRAG drag रो past tense. DRAG drag रो past tense. Drag रो अर्थ होछि टाणीबा. टाणीबा. Drag रो अर्थ होछि टाणीबा घोषाडी नेबा ताको टाणीबा को पूरी भीतर ड्रैग में घोषाड़ी के नेबा घोषाड़ी जो नेसे ताको कहते हमें ड्रैग तो ड्रैग माने घोषाड़ीला जबरदस्ती जो हमें तो टाणी नो ना जबरदस्ती जो टाणी ताको हम ड्रैग को घोषाड़ीला ओके तो तापर आसी अछि हमर LEAVES lives LEA सॉरी तापर अछि listened तापर आसी गेला हमर listened हो छै LISTENED listen हो छै listen रो past tense होछि listen 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 अर्थ होछि सुनिबा listen अर्थ होछि सुनिबा तार पर आसिला NEVER 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 अर्थ होछि केबे नुहे never अर्थ होछि केबे नुहे ताला सुनिला नेवर हे गेला केबे नु है तापर से लुक्ड LOOKED लुक होछि लुक रो पास्ट टेंस लुक समझ जाय छ लुक माने कोन देखिबा लुक माने देखिबा जो हम जो आखि दिस हम देखि थो देखिबा तो लुक अर्थ होछि देखिला तापर एसला footprints FOOT foot PRINTS prints footprints foot अर्थ पाद
प्रिंट्स अर्थ चिन्ह तो फुटप्रिंट्स अर्थ होचे पाद चिन्ह फुटप्रिंट्स होचे पाद चिन्ह जमी आम बाली कादुआ उपर चली गला बेले आम पाद जो चप्पल जो पिंधु चिन्ह रही है ना तो सेटा होचे फुटप्रिंट्स पाद चिन्ह HARDLY हार्डली HARDLY हार्डली HARD हार्ड होचे हार्डली HARD हार्ड अर्थ होचे कठिन कष्ट तो हार्डली अर्थ होचे सही कष्ट 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 तारपर से THOUGHT THOUGHT এটা হচ্ছে থট THOUGHT থট থট হচ্ছে THINK थिंक थिंक रो पास्ट टेंस होछि थॉट थिंक माने चिंता करिबा चिंता कर जदि हमको जने के कोनो पचारला बा हम ताको जदि चिंता करिबो ना तो भाबिबा चिंता करिबा तो चिंता करिबा थिंक होछि थिंक रो पास्ट टेंस होछि थॉट थॉट माने चिंता कला तापर आसी गेला हमर LEAVES LEAVES এটা হচ্ছে লিপস হচ্ছে LEAF লিপ র প্লুরাল ফর্ম হচ্ছে লিপস LEAF লিপ লিপ अर्थ पत्र जो गछर जो पत्र था ताको हमें लिप कहितु और लिप्स माने बहुत गुडे पत्र ताको हमें LEAVES लिप र प्लुराल फॉर्म बहुवचन होछि लिप्स लिप्स माने पत्र गुडिक एठी होला गोटे पत्र को लिप कहितो तो लिप्स होछि पत्र गुडिक तब आसला बुसेस BUSHES बुसेस बुसेस होछि ए बुश बुश रो प्लुराल फॉर्म होछि बुसेस बुश माने होछि बुदा बुश माने होछि बुदा तो बुसेस कोन हेबा न बुदा गुडी को बा बहुत सारा बुदा ओके तो तार पर आसिला हमर फलन FALLEN फलन FALL फल माने पढिबा फल माने पढ़िबा फलन माने पढ़ी जाइथिबा GRAIN ग्रेन ग्रेन माने शस्य लाइक व्हीट राइस दीज आर ग्रेन ग्रेन रो ग्रेन्स माने शस्य गुडिक तो धान चावल गहम एरो सब ग्रेन कहितो ग्रेन रो ग्रेन्स तापर आसीला BEES बीज बीज माने माछी और हियर बीज अर्थ होचे महुमाछी महुमाछी जाको मैं हनी बी कहि के मध्य कहितो बीज अर्थ होचे माछी एठी हमर महुमाछी हबा तापरे SUPPOSE सपोज SUPPOSE सपोज बोध हुए मु आशा करे तो विभिन्न अलग अलग जगह रे अलग अलग अर्थ होचे सपोज सपोज आई थॉट बोध मु चिंता करूछि तो एठी मु आशा करे मु चिंता करे एठी सपोज अर्थ होछि मु चिंता करूछि सपोज होई थै पारे मे बी तापर आसी गेला हमर एनफ ENOUGH एनफ एनफ माने हला बहुत एनफ माने बहुत बेसी तब रहला INTELLIGENT इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट माने बुद्धिमान ज्ञानी इंटेलिजेंट अर्थ होछि ज्ञानी बुद्धिमान यार बेसी ज्ञान थाए ताको हमें इंटेलिजेंट लोक कहि था इंटेलिजेंट ज्ञानी बा बुद्धिमान जर बहुत बुद्धि थाए तब रसीला देखो लीव LEAVE एठी गोटे से मार्क करो गोटे से ध्यान से सुनो एठी देखो एठी भी अछि लीव और एठी हमें आगु आलोचना करला लीव्स एटा होछि लीव एटा होछि लीव्स तो एठी जो अछि एठी स्पेलिंग देखो LEAVES अछि तो एठी अछि LEAVE बट एटी होछि जो LEAVES लिप्स होछि एटी होछि लिप रो प्लुरल सेंस होछि लिप्स जो लिप्स आर बहुवचन होछि लिप्स बट हियर LEA लिप लिप माने होछि छाडी दबा माने त्याग करिबा एठी लिप अर्थ होछि त्याग करिबा
এটা দেখো যদিও দুইটা জায়গায় স্পেলিং সমান, এটি LEAVES হচ্ছে, এটি LEAV স্পেলিং সমান হচ্ছে, কিন্তু অর্থ হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন। এটি লিভস অর্থ হচ্ছে পত্র গুড়িক, LEAF লিভ র প্লুরাল ফর্ম, আর এটি LEA লিভ হচ্ছে ত্যাগ করিবা বা ছাড়ি দেবা। বুঝিলা? তারপর আসিগলা ALON, এলোন। এলোন মানে একাকী, এলোন মানে একা, এলোন মানে একা। তারপরে আসিগলা HEAVY, হেভি, HEAVY হেভি। হেভি মানে হচ্ছে ওজনিয়া, ওজনিয়া। তারপরে হলো the last one is LOADS, loads, LOADS loads। লোডস অর্থ হচ্ছে জিনিসপত্র বোঝ, এটি হব আমার বোঝ। তুমি দেখিছো যে অটো মান পিঠে, বোঝ মান পিঠে যে জিনিস সব লদা হয়েছে তাকে আমি বোঝ বি কইতো, এটা হচ্ছে লোডস। তো এটা হচ্ছে আমি যে আজ আলোচনা করবা যে আমার প্যারাগ্রাফ, তো কিছু কঠিন শব্দ যেটা মু বাহার করেছি। তো যদি ଏହା ব্যতীত যদি ଆଉ ବି କିଛି ଅଛି ଦେନ୍ তুমি ତାକୁ ତମ ସେ କପିରେ ଯେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିବ, ଆମେ ତାକୁ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓକେ, then let's discuss about our today's paragraphs, the SGP second and SGP third, and our topic is the last camel. Okay, okay, let's start. Then what happened? Without answering, the old man said to them, is the camel carrying wheat on one side of its back? And हमें आगु पढ़िछे जेते बेले से मार्चेंट दी जण जाक से पचारले हमर काकू ना से बुढ़ा लोक को, तो तू से देखिछु कि से फोटो को, तो से बुढ़ा को कोन कहछि ना जे ता से जो प्रश्न रो उत्तर देबार परिवर्ते से माने को प्रश्न पचार पचार जाइछि। तो तापरे कोन होछि, तो जेते बेले तमे पचारले तू ताकू देखिछु कि दस प्रश्न पचारिछि, तो तापरे कहछि without answering the old man said to them, then without answering the questions of the merchants, the old man said to them, so से merchants मानकर प्रश्नर उत्तर देबार परिवर्ते से कोन करछि, said to them तांको कहछि is the camel carrying wheat on one side of its back? तो कोन से गध से ओटोटा ता पिठिर गोटे पटरे व्हीट बोही थिला कि, व्हीट अर्थ कोन हम कहिले, व्हीट अर्थ गहम, गुड। तो से बुढ़ा लोकटी से मार्चेंट दी जण को पचारुछि इज द कैमेल कैरिंग व्हीट? तो से ओटोटी से गहम बोही थिला कि ऑन वन साइड ऑफ इट्स बैक, ता पिठिर गोटे पार्श्वरे से गहम बोही थिला कि? The owner said it was. The owner माने एठी owner अर्थ होचे the merchant. Here the owner means the merchant. The merchant said it was. तो जते बेले से बुढ़ा लोकटी पचारुछि जे से ओटोटी ता पिठिर गोटे पार्श्वरे गहम बोही थिला कि, तो सेते बेले the owner ता the merchant said, से merchant कहउछि it was, हां से बोही थिला। They were sure that the old man had seen the animal. तो जते बेले फास्ट हम पढ़ितिले जे जते बेले से बुढ़ा लोक कहछि से अंध थिला कि, छोटा थिला कि, बुढ़ा थिला कि, तो परे जते से कहउछि जे से हमर सत्य तांकुटी आशंका हितला जे बुढ़ा लोक देखि के हम से मजा करछि। जते बेले से बुढ़ा लोकटी कहला जे से जो ओटोटी ता पिठिर गोटे पटरे गहम बोहितिला कि, तो सेते माने सेते से माने कोन हैला, तो श्योर हो गेले, निश्चित हो गेले, निश्चित है कौन निश्चित है that the old man had seen the animal, निश्चित है that the old man had seen the animal। ना से बुढ़ा लोकटा कौन करछि ना से जो ओटो को से माने खोजिचंती से मरुभूमि रे से ओटो को से बुढ़ा लोकटी निश्चित भाव रे देखिछि कहि कि से मर्चेंट माने श्योर हेले, कोन हेले ना श्योर हेले। is not the camel carrying honey on the other side? तापरे कोन होइछे is not the camel carrying honey on the other side? अब से बुढ़ा लोक पुणी पचारछि कोन ना is not the camel carrying honey other side? तो बुढ़ा लोक तांको पचारछि से ओटोटी गोटे पटर तो गहम बोहितला, से गहम जो पटे बोहितला ता आरो पार्श्वरे अन्य पटरे से महू बोही नथिला कि? से कोन कहछि माने से पटरे जे गोटे पटरे गहम बोहितला, अन्य पटरे
महू बोही थिला तो से कहूँ इज नॉट द कैमेल कैरिंग हनी ऑन द अदर साइड तो से अन्य पटरे महू बोही नथिला कि तापर कहूँ द ओनर कट होल्ड द ओनर कट होल्ड माने ओनर माने कोन मर्चेंट द ओनर कट होल्ड ऑफ द ओल्ड मैन तो तापर कोन ला से जो मर्चेंट थिले से माने से बुढ़ा को धरी पकड़े जाउडी धरिले से बुढ़ा को से माने कोन कले ना धरी पकड़े एंड आस्क्ड हिम एंग्रीली एंग्रीली से ओनर बा से मर्चेंट्स माने कोन कले जेते से बुढ़ा प्रथमे कहला जे से गहम बोहितला कि तापर जेते से पचारला हनी बोहितला कि तो से माने श्योर हो गेले जे ना बुढ़ा लोकटा हमर ऑटो को देखिचे तो द ओनर कट होल्ड ऑफ द ओल्ड मैन एंड आस्क्ड हिम एंग्रीली से मर्चेंट कोन कले ना से बुढ़ा को धरी पकाले एवं ताकू एंग्रीली एंग्री माने राग तो रागी की पचारले केमती पचारिले आस्क्ड हिम एंग्रीली कौन पचारे हैव यू स्टोलन दी गुड्स हैव यू स्टोलन दी गुड्स STOLEN स्टोलन स्टोलन अर्थ होची STEAL स्टील रो स्टोलन स्टोलन मतलब चोरी करवा तो ताकू से मर्चेंट्स माने से बुढ़ा को धरी के पचारछन्ते हैव यू स्टोलन दी गुड्स तू कौन से जिनस गुडा को चोरी करि नलु कि एंड किल द एनिमल तू से ऑटो को उस ऑटो जो जिनस बोही थिला से जो व्हीट एंड हनी हैव यू स्टोलन द गुड्स तू से जिनस गुडा को चोरी करि नेलु एंड किल द एनिमल तू से जिनस गुडा को चोरी करि के नै गेलु एवं से पशु को मारि देलु कि पुरा कोन कहूचे आई हैव नॉट सीन द एनिमल सेड द ओल्ड मैन कामली तो जेते बेले से मर्चेंट ताको एंग्रीली क्वेश्चन करछन्ते जे कोन ना तू से जिनस गुडा को चोरी करि के नै जाइछु एवं ताको मारि दिछु कि इन आंसर आई हैव नॉट सीन द एनिमल said the old man calmly ता परिवर्ते से बुढ़ा लोकटी calmly CALM calmly एंग्री रो उल्टा होची काम शांत हो से ओल्ड मैन तो शांत हो रे कहला आई हैव नॉट सीन द एनिमल मु से पशु को देखी नहीं मु से पशु को पशु एनिमल मींस द कैमल मु से ओटो बा से पशु को देखी नहीं द मर्चेंट्स आस्क्ड हिम डू यू थिंक we are fools to believe your story एते बड़े से लोग बुढ़ा लोग को कहू छे जे ना मु से पशु को बा से ओटो को से कैमल को मु देखिने द मर्चेंट आस्क्ड हिम से मर्चेंट्स जो दी जन थिले से ताको पचारले हिम माने द ओल्ड मैन से मर्चेंट्स आस्क्ड द ओल्ड मैन डू यू थिंक वी आर फूल्स टू बिलीव योर स्टोरी तू भाबु छु जे तो जो ए जो तो गप कहू छु जो मन गडा गप कहू से गप को हम विश्वास करबो हम कोन मूर्ख एटी फूल्स FOOL फूल्स माने FOL फूल माने मूर्ख फूल्स दी जन अछंती पूरा कहूँ फुल्स तो से मर्चेंट्स माने कहते तू कौन चिंता करूँ आम कौन मूर्ख जे ना तू जो जहाँ भी गप कहबू स्टोरी तू जहाँ भी गप कहबू गोटे मन गढ़ा गप कहबू तू जहाँ भी कह विश्वास करू तू कहूँ से ओटोटा गहम व्हीट बोही गोटे पक्षे अन्य पटे से हनी बोही से लैम से ब्लाइंड से ओल्ड तापर तू कहूँ आम देखी देखी आई एम नॉट सीन द एनिमल डू यू थिंक दैट वी आर फूल्स भावुँ कौन आम मूर्ख एति एंड दे ड्राग्ड हिम टू दी कोर्ट तापर कौन है से दी जन जाक से कोर्ट को लेकिन गले ना से बुढ़ा लोक को जो बुढ़ा लोक को से डेजर्ट जो मरुभूमि भेटी जहाँ को से लस्ट कैमेल जो हजी विषय पचार से मैंने बुढ़ा को लेकिन कोर्ट को गले टू दी कोर्ट को गले कौन है The judge listened to the merchant story. तापरे से जज कोर्ट रे जज माने विचारपति जे विचार करनते से थांते तो जज फर्स्ट वन लिसन टू द मर्चेंट स्टोरी से व्यवसायी मानकर स्टोरी गप माने कोन स्टोरी माने ताकर जो कथा जहाँ जहाँ घटितला केमते से ओटो हजिला से बुढ़ा को भेटिले बुढ़ा को जहाँ पचाले से बुढ़ा उत्तर रे कोन कोची ता सब कहले तो जज लिसन माने सुनिले तब सुनिले देन ही टर्न टू द ओल्ड मैन तापरे से बुढ़ा लोक को पाखु पचारे बुढ़ा टर्न माने बुलिबा परिवर्तन हो तो टर्न माने बुलिबा हे पारे परिवर्तन हो तो जज फास्ट से मर्चेंट मान कथा कहले तापर से बुढ़ा लोक पाखु नजर गला से पचारे देन ही टर्न ही मीन्स द जज टर्न टू द ओल्ड मैन एंड आस्क्ड हिम तो तापर से जज से व्यवसायी मानकर कथा को सुनि सारिकी तापर से बुढ़ा लोक को पचारिले कौन पचारे वेयर ही हैड सीन द कैमेल he had seen the camel जे बुढ़ा पूछे जे तुम्हें
बा से ओटो को केउठी देखिछि से ओटो के केउठी देखिछि बा केउठी देखिथिला The old man said he had never seen it in his life. और जेतेबेले से जज महाशय जे विचारपति महाशय से बुढ़ा लोक पचारले जे तू ओटो कोठी देखिछु से बुढ़ा लोक कहिला जे he had never seen it in his life or I had never seen it in my life. मो जीवन रे केबे मध्य से ओटो को देखि नाही मु से ओटो को मो जीवन रे केबे देखि नाही माने मु मोटे ताको देखि नाही तापर how do you know the camel is lame in one leg the judge asked the old man तो जेतेबेले से बुढ़ा लोकटे कहला जे मु ओटो को देखि नाही सेतेबेले से जज से बुढ़ा को पचारिले how do you know the camel is lame in one leg तो जेतेबेले पचार कोन तो जदि तू से ओटो को देखि ना हूं तो तू केमिति जानले जे से ओटोटा गोटे गोडरे छोटा कहि LAME लैम माने होची छोटा जेतेबेले से फास्ट बुढ़ा कोइतला जे ओटो छोटा थिला कि तो जेतेबेले से मास्टर स्टोरी सुनिले से बुढ़ा को पचारले जज ए तू ओटो कोड देखिछु तो से बुढ़ा कहला ना मु ओटो को देखिनी सेतेबेले जज पुनी पचारले जदि तू देखिनु से ओटो को तो तू केमिति जानलु जे से ओटोटा जो ओटो होजी जाइछे से ओटोटा गोटे गोडरे छोटा लैम इन वन लेग गोटे गोडरे छोटा कहि तू केमिति जानिलु I looked at the footprints on the sand said the old man तो जेतेबेले जज महाशय पचारले जे तू केमिति जानलु से ओटोटा गोटे गोडरे छोटा कहि तो से बुढ़ा को कोन कहूची I looked at the footprints on the sand ना मुसे बाली रे पड़िथबा SAND 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 माने बाली SAND sand माने बाली से बाली रे पड़िथे पाद चिन्ह से पाद चिन्ह को मु देखिली हां पाद चिन्ह को देखिली हमें जेमते बाली ऊपर बा कादरे गले हमर चालले हम पाद चिन्ह पड़िथे तो से बुढ़ा कोठी कहूची ना जे बाली रे जो पाद चिन्ह पड़ितला से आकु मु देखिली and one of them could hardly be seen गोटे ओटोरे केतरा गोड़ चारटा गोटे ओटोरे चारटा गोड़ था ना तो से जेते चले गोड़ चारटा पाद चिन्ह पड़िबो तो सेते बेले से बुढ़ा लोक कोन कहूची ना मो से जो बाली रे जो पाद चिन्ह पड़तला ताकू देखिली एवं से पाद चिन्ह गुडी को मध्यरो गोटिए पाद चिन्ह बहुत कष्ट रे देखा जाऊ थिला माने बहुत से चारटा जो पाद चिन्ह चारटा मैं जेते बेले ओटो चलीबो एमती एमती चारटा पाद चिन्ह पड़िबो ना तो सेते बेले कोन से तीनटा पूरा क्लियर देखा जाउथला किंतु गोटेटा बहुत कष्ट रे देखा जाउथला तार अर्थ कोन से ओटो जेहेतु गोटे गोडरे छोटा थिला तेणु करी से पाद को ठीक रे बाली ऊपर पकाई पारु नथिला हमें जेमिति यदि हमर गोडे खंडिया आइ तो हम चली पड़ला हमें सीधा चलू ना एमती एमती चलू ना गोड़ गोटे छोटे छोटे तो से जेते जो गोडे हमर खंडिया आइ थाए से गोडे बेसी हम प्रेशर दउने तो ठीक सेमती से ओटो जो गोटे गोडे तार पाद चिन्ह देखा जाउथला बहुत कष्ट देखा जाउथला तो से लोक कहूची से बुढ़ा को कहूची जे मु ओटो को देखिनी किंतु से बाली रे जो पाद चिन्ह पड़तला से पाद चिन्ह को देखिली एवं से पाद चिन्ह मानक मध्यरो वन ऑफ देम कुड हार्डली बी सीन से पाद चिन्ह रो गोटिए बहुत कष्ट रे देखा जाउथला तीनटा पूरा क्लियर देखा जाउथला किंतु गोटिए कष्ट रे देखा जाउथला सेथिरु मु अनुमान कली जे से ओटोटी छोटा बा लैम हे थिबो नेक्स्ट कोन होची The judge smiled and asked why the old man thought the camel was blind in one eye. तो तार उत्तर सुने के जज खुशी से हसिले एवं पचारले कोन why the old man thought the camel was blind one eye. तो तार पचारे तो तापर तुमे केमिति चिंता कलो जे से ओटोटा गोटे आखि रे अंध कहि कि ठीक अछि चारटा पद चिन्ह रो गोटे पद चिन्ह जोना पड़सला सेते पे तुमे चिंता कलो सेटा छोटा कहि तब केमिति जानिलो जब केमिति चिंता कलो जे से ओटोटा गोटे आखि रे अंधा कहि कि the animal had eaten the leaves of bushes on only one side of the road said the old man बुढ़ा कोन कहूची the animal had eaten the leaves of bushes on only one side of the road बुढ़ा कोन कहूची ना से एनिमल एनिमल कैमल से कैमल कोन करछि ना रास्तार गोटे पार्श्व रे जो बुदा अछि से बुदार पत्र गुडी को से खाइछि रास्तार गला दी पार्श्व रे बुदा अछि किंतु से देखिछि जे गोटे पार्श्वर बुदार पत्र गुड़ा सब ठीक अछि किंतु गोटे पार्श्वर गोटे रास्तार गोटे पार्श्वर बुदार पत्र गुड़ा से ओटोटा खाइछि देन तापरे कोन अछि व्हाई डू यू थिंक द कैमल वाज कैरिंग व्हीट एंड हनी आग द जज तापरे जज पचारले तुमे केमि जानिलो जे ओटोटा पिठर गोटे पटरे गहम और अन्य पटरे महू होइतला कहि कि आई सॉ ants carrying fallen grains of wheat
on one side of the road, said the old man. बुढ़ा कौन कहूची ना मु देखिली जे रास्तार गोटे पार्श्व पिंपुड़ी माने से पड़िଥିବା शस्य गुड़ी को बोहिकी नौ थिले रास्तार गोटे पार्श्व से पिंपुड़ी माने से गहम बा शस्य थिला से शस्य को गोटे पार्श्व से माने बोहिकी नौ थिले गहम दाना गुड़ा को बा गहम शस्य गुड़ी को रास्तार गोटे पार्श्व दी पार्श्व ने गोटे पार्श्व से माने पिंपुड़ी माने ताको धाड़ी के बोहिकी नौ थिले देखो मु देखिची and there were bees flying around on the other side, I suppose, said the judge. तापर जज कौन कहले ताहेले रास्तार अन्य पार्श्व रे निहाती मधुमाछी माने उडुथिबे मु आशा करूछि तापर लोकर बुढ़ा लोकर कथा सुनि जज कहउछन्ती तो जदि गोटे पार्श्व रे जदि पिंपुड़ी माने बहिकी नउथले तो रास्तार अन्य पार्श्व रे मु आशा करूछि भाबुछि मधुमाछी ने उडुथिबे yes your honor said the old man तो तांकर सुनि के से बुढ़ा लोग कहे यस योर ऑनर हाँ महाशय तो ठीक कथा रास्तार गोटे पार्श्व पिंपुड़ी मैंने गहम बोहिकी नौले अन्य पार्श्व महुमाछी मैंने उड़ुले कहीं मुह पड़ा तो माछी मैंने से मुह खाया उड़ुले कौन है दि जज देन टर्न टू दि मर्चेंट्स एंड सेड बुढ़ा लोक कथा शुणी सारे बुढ़ा लोक जहाँ जहाँ प्रश्न पचारे से ठीक ठीक उत्तर देला से पचारे केमती जान से छोटा थिला से कहले पाद चिन्ह देखी जानिले पचारे केमती जान से अंध थिला से कहले जे ना से रास्तार गोटे पार्श्व खाली बुदा पत्र खाई जाऊला कहीं आम एमती करवा तो गोटे पार्श्व देखा जो पटा अंध थी आखि फल देखा अने देखला जो पार्श्वटा दिशला से खाई गला आ गोटे पार्श्व देखा ना कहीं से अंधटा गोटे आखिरे तो तापर पचारे जे तू केमती जानलु जे से पिठी में गहम और मुह बोही बोईकी तो से कहला जे ना गोटे पार्श्व पिंपुड़ी माने आमर गहम को बोहिकी नौले तो ताकरा शुणिकी जज कहले जे कौन ना ताहले मु भाबुचे जे अन्य पार्श्व माछी सब उड़ुथिबे कहीं मुह पड़े मीठा पड़े माछी आसु आसती से लोक कहला हाँ महाशय ठीक कथा तापर कौन है दि जज देन टर्न टू दि मर्चेंट्स एंड सेड तापर से व्यवसायी मानक जज कौन कहले दिस मैन हैड मेड यूज ऑफ हिज आईज टू लुक एट ऑल थिंग्स ए जो लोक अछि ए बुढ़ा लोक कौन होची ना से रास्ता गला समय से जिनिस गुड़ा को जो जिनिस से वर्णना कला जो घटना से वर्णना कला से सब जिनिस गुड़ा को से पूरा तार आखिरे भल भाव से देखी आखि को तार व्यवहार कर देखी यू हैव आईज टू तुमर मध्य आखि अच्छी यूज देम ताको व्यवहार कर एमती आम रास्ता जाऊ बहुत जिनस आम रास्ता देखू कि केतेटा मन रही है केतेटा मन रही कहीं जो जिस को आम ध्यान सहित देखी था मन रही है जोटा आम ध्यान सहित देखुनी आम मन रहे ना तो बुढ़ा से सब ध्यान सहित देखी तो तार मन रही है तो जज कहते यू हैव आईज टू तुमर मध्य आखि अच्छी यूज देम ताकू व्यवहार कर यू विल फाइंड योर एनिमल तुम्हें तुमर पशु को निश्चित भाव में पाइज ए बुढ़ा लोक तार आखि को व्यवहार कर जिन गुड़ा को जाना पाइला जे ओटोटा छोटा थिला ओटोटा अंध थिला ओटोटा गहम एवं मुह बोही सब जिन जानी पारा तुमर मध्य आखि अच्छी तुम्हें से आखि को व्यवहार करवा यू विल फाइंड योर एनिमल तुम्हें तुम पशु को पाइज आपने कहले हैविंग आईज इज नॉट एनफ खाली आखि थिले ही बहुत नुहे आखि थिले ही बहुत नुहे गोटे बहुत बड़ कथा से कहले हैविंग आईज इज नॉट एनफ बी इंटेलिजेंट टू खाली आखि थिले ही बड़ नुहे सहित आमको कौन हम बुद्धिमान हेबाकू मध्य पड़िबो यदि खाली आम आखि थी खाली आम देखुवा खाली देखुवा कौन होची किंतु आम मुंडर किसी पशु आम चिंता कर पारे जे कौन होची केमिति होची कहीं होची तो आम देखा न देखा पूरा समान तो से जज तांको कहले से माछी कहले कौन कहले हैविंग आईज इज नॉट एनफ खाली आखि थिले हेबो नहीं बी इंटेलिजेंट टू सहित बुद्धिमान मध्य बन ज्ञानी मध्य बन एंड व्हेन यू फाइंड योर कैमेल माने तुम आखिर व्यवहार कर आउ जिस देख तापर से कहले व्हेन यू फाइंड योर कैमेल लुक आफ्टर इट वेल एवं तुम्हें जिते तुम से कैमेल को पाइज लुक आफ्टर इट माने यार जत्न नियो भल भाव यार जत्न नियो डू नॉट लीव इट एलोन ताकू आउ केबे भी एकाकी छाड़िबो नाही ताकू कदापि एका छाड़िबो नाही ताकू एका छाड़िबो नाही डू नॉट गिव हिम हेवी लोड्स टू कैरी ताकू आउ बेसी ओजनर जिनिस बोहिबाकू देबो नाही ताकू बेसी बोझ बोहिबाकू देबो नाही देन द जज सेंड देम अवे यह कोई सारी कि से जज देम माने से मर्चेंट्स और से ओल्ड मैन जो माने कि मर्चेंट्स ओल्ड मैन कोनी थिले जज के पाखु निया पे से जज तांकू पठे देखले तांकू से माने तांकू से पठे तांकर गाना से तांकर जो केस थिला से तो सरी थिला मर्चेंट जहां भी आरोप लगे थिले जो सुनिले
बुढ़ा लोकर उत्तर से खुशी होइले एवं से मार्टिन्स कहले जे तुमर से बुढ़ा लोक तार आखिर व्यवहार ठीक भाव में करछि सेति से कथा कहि परछि तुमर मध्य आखि अछि तुमे भी मध्य भलो करके जिनसडो देखो तुमे तुम जिनिस तुम पशु को पाई जीवो एवं कहले खाली आखि थिले बहुत किछि नुहे आ सहित खाली आम कोन माने बुद्धिमान बा ज्ञानी हेबाकू मध्य पड़िबो तापरे कहले तुमे आउ तुम कहले जे तुमे जते बेले तुमर पाई जीवो से कैमेल को तार जत्न नियो ताकू एका छाड़ीबनी एवं ताकू बेसी लोड बोहिबा बा बेसी बोझ बोहिबा को देबो नै ए कथा कहले एवं तापरे से माननको घर को पठाई देई थिले दिस इज द स्टोरी द रेस्ट ऑफ ऑल द स्टोरी द लास्ट कैमल to I hope you all have understood the same then to comprehend the same तो आमे केते बुझिले सेते पे गुटे हमर जस्ट कुछ कंप्रेशन क्वेश्चन अछि then let's discuss it आलोचना करिबा तो फर्स्ट वन होचे what was the camel carrying on its back the first question होचे what was the camel carrying on its back से ओटो टीता पिछरे कोन बोही थिला what was the camel carrying on its back से ओटो टीता पिछरे कोन बोही थिला did he school did he school okay the right answer give a big round of applause with ताली भेजो ठीक है the camel was carrying wheat and honey on its back से ओटोटे wheat and honey से ओटोटे गहम एवं honey बोहिथिला ता पिथिरे से ओटोटे wheat and honey बोहिथिला from the second question how did the old man know that the camel was lame in one leg how did the old man know that the camel was lame in one leg से बुढ़ा लोकटी केमिति जानिबा को पाइला जे से ओटोटा गोटे गोड़रे छोटा अछि से ओटोटा गोटे गोड़रे छोटा बा छोटा कोइ कि से बुढ़ा लोकटी बा से बुद्ध व्यक्ति केमिति जानिबा को पाइला how did the old man know that the camel was lame in one leg which school तो बुद्ध लोकटी केमिति जानिबा को पाइले जे से ओटोटी छोटा छला होई गे यस आदि स्कूल यस The old man knew that the camel was lame in one leg because he looked at the footprints on the sand. Okay, very good. Right answer. ठीक है ताली है जो तांको पे ठीक है ताली है जो ठीक है The old man knew that the camel was lame in one leg because he had noticed the footprints of the animal in the sand. तो से बुढ़ा लोग को टिकट जानिले जे से ना कहे कि ना से ओटोर पाद चिन्ह गुडी को से देखिथिले से पाली ऊपर एवं सेठार गोटे पाद चिन्ह बहुत कम देखा जाउतरा तेनु से जानि पाले जे से ओटोटे गोटे गोडर छोटा अछि होई कि और क्वेश्चन हाउ डिड द ओल्ड मैन नो दैट द कैमल वाज ब्लाइंड इन वन आई से वृद्ध लोकटी केमिति जानिले जे से ओटोटे गोटे आखिरे अंध से ओटोर गोटे आखि देखा जाउ नाही कहि कि से बुढ़ा लोकटी बा से वृद्ध लोकटी तो ओल्ड मैन केमिति जानिले हाउ डिड द ओल्ड मैन नो दैट द कैमल वाज ब्लाइंड इन वन आई तो मदर स्कूल हाउ डिड द ओल्ड मैन नो दैट द कैमल वाज ब्लाइंड इन वन आई यस द मदर स्कूल से केमिति जानिले जे ओटोटा गोटे आखिर अंध कहि कि नया बाजार The old man knew that the camel was blind in one eye because the animal had eaten the leaves of bushes on only one side of the road. Okay, police school. Good answer. Thank you. This is the right answer. The old man knew that the camel was blind in one eye. से बुद्ध लोक जानिले जे ओटोटे गोटे आखिर अंध कहि काहे कि कारण it had eaten the leaves of bushes on only one side of the road. ए रास्तार से गोटे पार्श्वर थिबा बुदार पत्र गुडी से केवल खाइ खाइ जेइतला अन्य पटे जो बुदा थिला से बुदार पत्र से खाइ नथिला तो सेथु जानि पले जे ओटोर गोटे आखिटा अंध सेति पे से रास्तार गोटे पार्श्व को देखिला एवं से बुदा गुडो खाइ गेला अन्य पार्श्व से देखि पारला नाही. Very good. Right answer. Next question.
How did the old man know that the camel was carrying wheat on one side? तो बुधर केमती जानिले जे से ओटटे तर पिठर गोटे पासरे गहम बोहिछि कोइ से केमती जानिले? Tent housing colony high school. Tent housing colony. How did the old man know that the camel was carrying wheat on one side? तो गोटे पासरे गहम बोहिछि बुधर केमती जानिले? A camel carrying honey on the other side because he found bees flying around on the other side of the. No. My question was, or my question is, how did the old man know that a camel was carrying wheat on one side? तो गोटे पटरे गहम बोहिथिला कहि से बुद्धर केमती जानिले? गोटे पटरे ता गोटे पासे तार पिठिर से गहम बोहिथिला wheat तो गहम बोहिथिला केमती जानिले? The old man knew that the camel was carrying wheat on one side because he saw ants carrying fallen grains of wheat on one side of the road. Okay, very good. The old man knew that the camel was carrying wheat on one side because he saw or he found that the ants carrying the fallen grains of wheat on one side of the road. So बुढ़ा लोग को देखिले जे रास्तार गोटे पार्श्वरे पिंपुड़ी माने से शस्य को बा से गहम को बोउचंती सेतिपे से जानिले जे से ओटर गोटे पिठर गोटे पटरे गहम लदा हुए थिला. Next question. How did the old man know that the camel was carrying honey on other side? तो से बुढ़ा लोग केमि जानिले जे से ओटर अन्य पार्श्वरे महुल बोहितला कहि कि बा महुल ओदा आइतले से केमि जानिले? हाथीबारी गवर्नमेंट हाई स्कूल. हाथीबारी हाई स्कूल उधर केमि जानिले जे उतर अन्य पार्श्वरे महुल ओदा आइतला महुल बोहितला कहि कि गवर्नमेंट स्कूल पूरा लेलंगा. How did the old man know that the camel was carrying honey on other side? से अन्य पार्श्वरे से महुल बोहितला कहि कि से उधर जो केमि जानिले? Okay, the answer is because he found bees flying around on the other side of the road. देखिले जे रास्तार अन्य पार्श्वरे माछी गुड़ाक सब उड़ुचंती तो सेतिपे से जानिले जे से अन्य पार्श्वरे महु सब लदा हेतला करि. लास्ट क्वेश्चन वाज, what did the judge advise the merchants to find the camel? से जज से मर्चेंट मानन को कोन उपदेश देले तांको सब कैमल को पावे कोन उपदेश देले? Okay, the answer is to use their eyes properly to find the camel. से तांको कहले ना जे तुमे खाली आखि थवा जो बेसी न ताको व्यवहार करो इंटेलिजेंट बनो से तांको उपदेश देले यूज देयर eyes properly. से तो खोजिबाकू तो से फोटो को खोजिबाकू तुमे तुम आखि को ठीक भाबरे व्यवहार करो. The judge advised the merchants to use their eyes properly to find the camel. And जो in this conversation you all have answered the question correctly. And from this we came to know that तुमे माने सब ठीक से बुझी परछ आ जहा भी तमर अछि कंप्रेशन क्वेश्चन ताको तुमे सब्जेक्ट टीचर सहित हमर त कंप्लीट कर नेबो आ या पर किछि जस्ट गोटे होमवर्क अछि गोटे पैराग्राफ अछि से पैराग्राफ किछि मिसिंग लेटर्स अछि तो जो तमर टेक्स्ट अछि ए टेक्स्ट जो फिलिंग द gaps ए गैप को सब having dash is not enough, be dash, and when you dash your camel look after it dash, don't leave it dash, don't give it heavy load to dash. तो एटा तमर पैराग्राफ को खोजिबो गैप सब ब्लैंक रो से फिल करबो एवं तमर सब्जेक्ट टीचर तंगठो ताकू तमे मोर क्वेश्चन करे नेबो. That's all for today. Thank you.